Can't see this window? Yes, sir, we will see. Oh, you can see. Okay. Screen sharing is stopped. I share window is closed. So I got this message. So if anything happens like that, please tell me. So now in waiting room, again, I will not go to waiting room because my time is being wasted. So who is checking? This is very convenient. Interesting. So sharing. I was sharing this screen now. Now you can see this screen. Central conditioning, structural plans. Now, central air conditioning, it may be central unit type with air ducts, it may be without duct, so it is called ductless and with duct. Then air handling unit with ducts, floor mounted inside conditioned space, it may be on the rooftop. So air handling unit floor mounted, maybe inside or outside. Unitary type air conditioning system. Actually, this topic I have already covered in part 1 in the application. Now split AC and DC inverter and AC without ducts and that. I have included in my folders something else also, and that is pictures, images. In images, you will find all photos of these types of air conditioning. And let's go to another share document. Now I define standard capacity. So you can see my window. So define standard capacity. Standard capacity is defined as following. So evaporating temperature must be kept 15 degrees centigrade minus 15, and condensing temperature should be plus 30 degrees centigrade. It is also called nominal capacity of air conditioner. So all the equipment catalogs, manufacturers catalogs will define capacity 1 ton, 2 ton, 1.5 ton, or whatever capacity it has. But that means evaporating temperature, it was tested at evaporating temperature minus 15 degrees centigrade and condensing temperature plus 30 degrees centigrade. You can compare this with actual condition. Actual condition, environmental condition in Pakistan. Yeah, anybody want to speak? सर स्क्रीन नहीं आ रही ऊपर मेरी आवाज नहीं आ रही स्क्रीन नहीं आ रही सर ब्लैंक स्क्रीन है स्क्रीन नहीं आ रही स्क्रीन I am sharing with you Now the screen is visible. shareable on. It's not now. So now the screen is not visible. You can't see my lecture notes on the screen? No, sir. It's not visible. Visible. Maybe you have Now it's visible. Now it's visible. Okay. Now can you see my screen? This one? Classify central air conditioning. Huh? No, sir. No, sir. PDF is not appearing. Sorry? Yes, PDF is not appearing. नहीं स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ अपनी वीडियो मैंने नहीं शेयर कर रहा
तो जी PDF जो आप चला रहे हैं ना, PDF नहीं आ रहा ऊपर। Sir, the Black PDF screen हो is not जाती है। working. PDF is not working. The names are visible, but the PDF is not working. See this picture, air handling No, unit. it's not visible. It's still black. Wait a minute. Yeah, this one, No, sir. Still black. I have clicked. Now it's visible. Uh, Now it's working. okay. Anyhow, if you will have such problems because this is, see, the first time we are practicing. With practice, we will improve it. We will know how to use it. So, I am also using it first time in my life. So, I hope you will forgive me if I am not doing something in time. You see, in order to avoid disturbance, I have removed my video because you should keep my lecture in voice only. Okay? So these lectures, anyhow, if you miss it and time is short, we are running short of time. After 10 minutes, it will be our lecture will be off. So then we will continue next lecture at 11:15. So I request everybody to and tell everybody on phone or email that please come 15 minutes earlier. So if 11:15 is the time, you must join at 11 o'clock. So I could manage the windows who should to click OK for joining. So now this all material I am already send you by email in advance. So you can study there. Also after the lecture, before the lecture, you have a choice to study there. Over and above, I hope it is being recorded also, and its video record is going on this all screen with my voice. It is being recorded at their platform, and that can also be. Hello? It's not recording here. Huh? Sorry? रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो रही। आप छोड़ दे, मेरा हो रहा है ऑटोमेटिक, मेरा जो है ना वो हो रहा है, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ठीक है ना? एक्चुअली एक तो ये प्री वर्जन है, दूसरे है कि आप सिर्फ गेस्ट हैं, आपने खुद अपना सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया, आप जो ना होस्ट नहीं है, मैं होस्ट हूँ, मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है? तो ये जो पिक्चर्स है आप देख रहे हैं कि ये हैंडलिंग यूनिट है, ये इसका ट्रांसपेरेंट व्यू है, उसके अंदर ये एक सेक्शन है जो फैन होता है, फैन में से रिटर्न एयर आ रही है, और ये रिटर्न एयर ये जो बॉक्स है, ये जो आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, ये हैंड वाला कर्सर, सो ये जो कर्सर है ये आपको शो कर रहा है, ये जो बॉक्स है ये पूरा ये हैंडलिंग यूनिट कहलाता है, इसके कई पार्ट्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, ये जो मॉड्यूल है, ये जो बॉक्स मिक्सिंग बॉक्स कहलाता है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये प्री फिल्टर है, ये वाला प्री फिल्टर है, उसके आगे कॉइल है जिसको कूलिंग कॉइल कहते हैं, उसके आगे फिर एक दूसरी कॉइल है उसको हीटिंग कॉइल कहते हैं, उसके आगे जो है ना फैन है जो कुछ पुल कर रहा है, यहाँ से एयर मिक्सिंग बॉक्स में से एयर को पुल करके इन तीन फिल्टर में से फिर कूलिंग कॉइल हीटिंग कॉइल में से ड्रॉ करके उसको आगे फेंक रहा है। इसके आगे एक और कॉइल है जिसको रीहीट कॉइल कहते हैं, और उसके आगे फिर एक और फिल्टर बॉक्स है और डैम्पर है, और ये सप्लाई एयर भेजेगा। सो अच्छा एक ह्यूमिडिफायर भी है, तो कूलिंग हीटिंग के बाद जब टेम्परेचर नॉर्मल रिक्वायर्ड हो जाता है तो ह्यूमिडिफाई भी करना होता है। सर्दी के मौसम में एयर में मॉइस्चर भी ऐड करनी पड़ती है स्टीम की शक्ल में, और उसके बाद एक साइलेंसर है, साउंड एटेन्यूएटर। ये फैन बहुत पावरफुल होते हैं, they are very powerful fans, they are very noisy, noise can be conducted through the ducts and it will go to the room, so it's not required. So that's why sound attenuator यानी silencer, गाड़ी का silencer होता है, supply duct में भी silencer होता है, ताकि machine का शोर, noise of machine should not transmit to the area where people are sitting. So then from conditioned space ये जो green arrow है उधर जाती है कंडीशन स्पेस को, फिर जो रेड एरो है ये रिटर्न होकर दूसरी डक्ट के जरिए, इसको हम रिटर्न एयर डक्ट कहते हैं, वापस इसी मशीन में आती है, और कुछ एयर इसका ये रेड एग्जॉस्ट है, यहाँ से एग्जॉस्ट कर दिया जाता है, और यहाँ से ये जो ग्रीन ओर है आउटडोर एयर इनटेक उतनी अमाउंट में कर दी जाती है। So this makes complete air conditioning, packaged air conditioning system, and this is called air handling unit. और practically you look like this, ये पाइप है बड़े बड़े चिल्ड वाटर के, और इसके ऊपर इंसुलेशन इसलिए बड़े बड़े लग रहे हैं, ये 2.5 इंच का पाइप, ये इतना बड़ा बॉक्स जो है ये एयर हैंडलिंग यूनिट का है, और ये जो है ना ये सप्लाई एयर है, और ये दूसरी जो है ना पीछे रिटर्न एयर है।
टर्नियर का वो डक्ट है और वो भी इंसुलेटेड है, दे आर इंसुलेटेड। उसके बाद चिलर्स एक मशीन होती है सेंट्रल एयर वाटर, एयर को सेंट्रली ठंडा करके कूल करके एयर को एयर हैंडलिंग यूनिट में फॉइल में भेजती है जहाँ से एयर ठंडी होती है। इसके बड़े बड़े पाइप से इंसुलेटेड है, ग्रीन और ब्लू कलर के। बंदा ये बंदा इंसान खड़ा हुआ इंजीनियर है, ऑपरेटिंग इंजीनियर है और इसकी हाइट देख लें कितनी है इन पाइप्स के मुकाबले। सो यू कैन सी दीज फोटोज क्विकली and browse, and their name is written there. So split type, packet type, air conditioner, all types are mentioned there. एक जो आखिर में जो ये type mention है, ये these are very new. We are called here. So are you seeing my window here? This screen PDF document. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this VRF is variable refrigerant flow. So one outdoor unit and many indoor units. These are indoor units. This is ceiling type, cassette type. और ये blue line जो cold refrigerant है, red line जो hot refrigerant वापस इस unit में आता है। ये centrally एक condensing unit एक से ज़्यादा cooling units यानी indoor units को supply करता है। इसको हम कहते हैं variable refrigerant flow system। ये recent phenomena है और इसको जो है ना ये मैं दिखा दिया आपको। और इस पर बाकायदा एक अशरे सेमिनार हुआ था लास्ट ईयर, वर्कशॉप हुआ था, हमारे स्टूडेंट ने उसको पेमेंट करके ज्वाइन किया था और वो 3 दिन तक वो पूरा लेक्चर इस पे कोर्स हुआ था, वो करके आए, उनको सर्टिफिकेट भी मिल गया। तो वेरी वेल रेफरेंस ये जो है ना ये स्प्लिट सिस्टम की तस्वीरें हैं, ये आप देख लीजिएगा। इसमें ज्यादा वक्त लेक्चर की